students, potential innovators, providing them different kind of support, guidance, and many of these students have set up their startups. So that way, this program is organized in that series of IISc calendar activities. And in addition to that, we have been organizing several other activities also that we say these self-driven activities. And the basic objective and purpose of those activities also again to foster the culture of innovation and startup in the university among the students and faculty. Ultimately, our aim is that whosoever is interested, they should be able to convert their ideas into a proper startup, into a proper full-fledged successful business, so that they are helping themselves, also helping other students by providing them employment, and in turn they will be helping the country also, making the Atmanirbhar Bharat. Instead of job seeker, they will be basically becoming a job provider. So that is our motive, and in that context, today's program is being organized. And we are really thankful to the Regional Center of Bhopal that they have organized such a wonderful program, and they have identified such good, experienced experts who will be sharing their ideas, who will be guiding the students, how they can take benefits of incubator, what is the role of incubators and accelerators in making these startups and enterprises successful. So thank you very much, and I hope this session will be very useful. Enjoy it and take advantage of this. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Sharma, for a very detailed and crisp introduction, and giving a very clear background of the institution's Innovation Council of IGNOU and the activities that you have been carrying out. It is really commendable that many students have joined us in these endeavors, and we are actually able to fulfill the objective for which this council was set up and the way it was envisioned. अभी आप जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा को, जो निदेशक है नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशंस इन डिस्टेंस एजुकेशन, इग्नू मुख्यालय. This program is jointly organized by NCID and IGNOU RC Bhopal, and it is a part of the series of events conducted by the institution's Innovation Council of IGNOU. अब ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार मैं देख रही हूँ कि हमारे बहुत सारे रीजनल सेंटर के साथी भी हमारे साथ है आज. सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ. आप सभी को पता होगा कि इग्नू MSDE MOU के तहत ITI जन शिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र अब इग्नू के प्रसार केंद्र है, और हमारे जन शिक्षण संस्थानों से बहुत सारे साथियों ने आज हमें ज्वाइन किया है. सभी का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि ये हमारा शायद पहला प्रोग्राम है जिसमें जन शिक्षण संस्थान के हमारे साथी भी इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. Without wasting any more time, we move to our speakers, because all of you are waiting to hear the speakers. Our first speaker for the day, Mr. Anay Mashruwala. I'll give a very brief welcome to the program, sir. You have a very impressive background. The CV has a lot of things to mention, but making it very brief for the interest of all our participants here, I'll just go through his profile very briefly. Mr. Anay Mashruwala is an entrepreneur by profession and an academician by passion. He is the director and promoter of Venus Engineering Works, a company working in the field of manufacturing and marketing of industrial valves. Mr. Mashruwala has over 14 years of entrepreneurial experience and plays a versatile role in taking his organizations to an international level. He is also the director at Krishna Interiors, a home furnishing and interior designing company. Along with his entrepreneurial journey, Mr. Mashruwala is also involved in startup ecosystem and is closely working with mentoring startups since the last 6 years. He is the head coach at Incubation and Innovation Center, the Incubation Center of Pandit Deen Dayal Petroleum University, and has been deeply involved with startups and the entire incubation process. In the last 6 years, it is really commendable and impressive that 150 plus IIC startups have won
more than 350 national and international awards. And he has applied for 200 IPRs, granted more than 100 IPR, created more than 3,500 jobs, raised 100 crore plus, and have a cumulative turnover of more than 75 crores. That is really commendable. We compliment and congratulate you, and hope with your talk you'll be able to inspire all our listeners. Just another line. Mr. Anay is an MBA from Nirma University, BE in Mechanical Engineering from Pune University, a degree in law from Gujarat University, and is currently pursuing PhD in the field of entrepreneurship and innovation from the Gujarat Technical University. So that is his credentials. Welcome to the program, Mr. Mashrubwala, and over to you for the lecture. Thank you so much, ma'am. I understand I have 35 minutes at the tops to talk. If you, with your due permission and due permission of all the August directors, I would like to share my presentation, if you'd allow me. Just a second, madam. So, first things first, some rules of engagement over here. Is this screen visible? Yes, sir, is visible. Okay, is the PPT visible to the fullest? Yes, we can see it. Okay, so first, some rules of engagement. This is going to be an interactive session. मतलब अगर आप मुझसे बातें नहीं करोगे तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ. Okay, so I would very strongly recommend that we have a conversation rather than a monologue. Okay, so I'm going to ask a lot of questions and I'm going to expect you guys to answer these questions. अगर कहीं पे भी बीच में कोई questions हो, queries हो, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बीच में टोक के पूछ लीजिएगा, एंड तक राह मत देखिएगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आप यहाँ पे क्यों आए हैं? Why have you joined today's program over here, where you could have been at 10,000 different places? Anybody? आपके expectation क्या है आज के टॉपिक? कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है आज? Hi everybody, my name is Vishal. Hi Vishal. Hi. Well, actually, the reason for me being here is I have a startup. We are into digital marketing, and I just wanted to see what IGNOU has to offer because I'm also a student of IGNOU. I'm going to pursue my master's from IGNOU. So I just wanted to see what IGNOU has to offer and what exactly with this entire program about opportunities for students and faculty and early stage entrepreneurs is going to be like. What kind of accelerators or incubation systems that you have in place, and how would me as a startup in the digital marketing arena would be able to associate with a lot of students where we can offer career opportunities, or is there any possibility of an opportunity engaging with students, offering them various secondary line of income, if that's a possibility? So I would just try to explore my possibilities over here. Great, Vishal. Great. For everybody else, keep your answers crisp and short. Okay, not more than 30 seconds. And you can chat also with me. Suraj is mentioning that he's a research scholar. Sanjay Gupta is saying he wants to learn and he wants to get inspired. For Kalvajit Kaur is saying that they're looking for gaining new ideas. Okay, great. So these are burdens on me. These are expectations that you guys have from me, that I would be in next 30-35 minutes be able to tell you what does an incubator do, what is it that isn't for you, how can you assist others, and how things work. Great. So that's the first part. Okay, next question. What do you guys think that an educational institution actually exists for? Why does an educational institution exist? Anybody? Quick 30 seconds answer, 10-20 seconds answer. Why does an education institution actually exist? Okay, Gopal Charan sir has raised his hand. Go ahead. Anybody would like to type it off? Why does an education institution exist? I think few people have raised their hands. So go ahead.
Jyoti, go ahead. Singh, Very good morning to everybody. According to my understanding, I believe that educational institutions are raised, first of all, to inculcate moral and good values, to mold yourself into a good human being first, and then afterwards for these worldly monetary accomplishments and all that is secondary. But first thing is to make them a good human being. So because if you are a good human being, definitely you will achieve, you will reach your goal. That is the primary. Secondary is whatever monetary, whatever you have to do in your life, your personal stuff. Okay, great. Daulat Singh ji, 30 seconds answers, not more than 30 seconds, please. Please try to keep it crisp. Yes, please. Daulat Singh ji, you raised your hands. Okay. Gopal Chandra ji, if you would like to say something. For channelizing the students, that is what Shiv says. Okay. Anybody else? I mean, just unmute yourself and start talking. Gopal Chandra ji, if you would like to say something. Okay. So let me give you my inputs. Academic institutions are basically here to give. Education institutions are basically here to provide education. As simple as that. But at the same point of time, what do we mean by this word education? My wife is pursuing Masters in Education, MA EDU from IGNOU, as a matter of fact. And it's a very interesting conversation that I'm having while I go through her books of IGNOU. And I personally am also interested to understand what does education mean. One very learned scholar told me that education has 3 components: skill set, knowledge set, skill set, mindset. So an education institution should be able to give knowledge set, which is books, which is theoretical understanding, which is what people have done. Second, skill set. Skill set basically means how to cycle, how to read, how to write, how to manage your time. This is what you do as a skill, And third happens to be mindset. Mindset, where, as Jyoti madam rightly pointed out, moral values, what is right, what is wrong, all these things come into the picture. Now, in the hierarchy of difficulty to implement or difficulty to impart, knowledge set is the easiest. You give a PPT, you give a link, people read about it, you can get it. Skill set is a little hard. Why? Because you need to practice it. Okay? If somebody knows how to cycle, you can read as much as you want to. आप जितना भी cycling के बारे में पढ़ लोगे, but जब तक आप cycle चलाने का try नहीं करोगे, आप सीख नहीं सकते हो. It's a skill set. Mindset, as a matter of fact, is the most important skill a person can have, or can be taught, can be imparted. Some people would say that it cannot be imparted also, but I beg to differ on that matter. It can be imparted, and that skill set or that mindset is the mindset with which we are here and we are talking about. And one of those mindsets happens to be a mindset of entrepreneurship, mindset of understanding your environment, identifying opportunities, and trying to persuade certain opportunities even when there is a risk involved. That's a mindset. And that mindset is extremely important. If you want to do an enterprise or even if you want to do a job, that mindset is important. And that mindset is the fundamental basics which an incubation center actually tries to work on. Okay, so next up. I'll remove this slide and I'll move ahead. Why you should be doing this stuff? Because fact of the matter is, if you don't do it as founders or as students, your right now's time is the least riskiest time for endeavoring into something related to entrepreneurship. Because even if you want to do a job, the only way you're going to grow in a job, or the only way you're going to rise up in your enterprise is again going to be when you take some risk. Because you will have to take some decisions which might work, which may not work. If they don't work, well, you will be reprimanded. You'll be told to do something. And if they work, you'll be promoted. That's what life is. And that's a risk involved. So that mindset of understanding risk and appetite to take risk while being very clear that there is an opportunity to fail is entrepreneurship. So you need to do that stuff. Educational institute needs to inculcate this in the minds of the people with a very similar objective, because there is a need for people to be given a mindset. Okay. So anybody, what is an incubator? Forget about the all jargons. What does this word mean? ये शब्द का मतलब क्या होता है incubator? From medical perspective, किसी को पता है ये क्या होता है incubator?
हेलो, कोई कुछ बताएगा इंक्यूबेटर क्या करता है बॉस? Where artificial grown up can be done. राइट, वेयर आर्टिफिशियल, Grown up ओके ओके, growth can be done. राइट, आर्टिफिशियल ग्रोथ हम लोग इनकलकेट कर सकते हैं। और कुछ? Incubator help new startups to grow. If there is any problem with the business, they guide how to develop their business and all other things. जी, so Diksha ji is saying that where immature babies are kept, very true. जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर छोटे फिशेस होती है, छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो एक लेवल तक ग्रो कर सके और आजू बाजू की दुनिया के अंदर उनको सर्वाइव करने के लिए अंदर इनबिल्ट इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। सो कुछ बेबीज होती हैं जो कि प्रीमेच्योर बॉर्न होते हैं, तो उनको एक इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, कांच की पेटी में रखते बोलते हैं। व्हाट इज प्रोवाइडेड इन दिस कांच की पेटी? एक लाइट दी जाती है, उनको फीड किया जाता है, उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है जो कि कंप्लीटली सैनिटाइज होता है, डिसइंफेक्टेड होता है, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर है उसके ऊपर अटैक ना हो सके और वो थोड़ा सा ग्रो हो जाए ताकि इवेंचुअली वो बाहर जब निकले तो वो उतना इम्यून हो और वो आगे बढ़ सके। That is for babies. That is also meant for animals. That is also meant for incubating eggs. That is also mentioned for incubating any living organisms. From that perspective, उसी चीज को आगे एक्सट्रापोलेट करके एक इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेटर रखा गया है नाम, जहां पे एक स्टार्टअप किसी के पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है जो कि बहुत ही नाजुक है, राइट? उनको नहीं पता है कि भैया मैं अगर मार्केट में एंटर होऊंगा तो मुझे कोई खा जाएगा, मुझे कोई मार डालेगा, मेरा कॉम्पिटिटर्स मेरा आइडिया लेके जाएगा, क्या करेंगे? उस लेवल पे किसी एंटरप्रेन्योर को अंदर आते हैं और वो आते हैं सपोर्ट सीख करने के लिए, ताकि कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ उनके अंदर बिल्ड हो जाए, कुछ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर बिल्ड हो जाए, ताकि वो रियल लाइफ सिनेरियो में मार्केट के अंदर सर्वाइव करने की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए वो खड़े रह सके। That's what an incubator is all about. Okay. अब ये इंक्यूबेशन सेंटर जब आप एक क्या कहते हैं एक फिश के लिए या एक टॉर्टोइस के लिए या फिर एक ह्यूमंस के लिए जो होता है, उसका इक्विवेलेंट एक एंटरप्रेन्योर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या देता है? वेल, वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है, वो एक ऐसी चीज देता है जहां पे कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है तो उसको सेफ फील हो, उसका आइडिया वहां से चोरी ना हो रहा हो, वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटी मिले, उसको उतना सपोर्ट मिले, मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट, ये सारी चीज की सपोर्ट मिले ताकि वो एक लेवल पे ग्रो हो सके, ताकि इवेंचुअली वो मार्केट में सर्वाइव हो सके, फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स उसके पास में आ सके, उसकी बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड हो सके, फिर उसको जाने दिया जाता है। जस्ट लाइक इन रियल लाइफ, Himanshu is saying incubation is a process of preparing something that survives under adverse circumstances. The unit organization machine incubates in the incubator. Very true, dear. Richa is saying incubator is an organization that helps startups, companies, and individuals to develop their business. Very true. Now, this is great. Now, what is an accelerator? So, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर का ही एक्सटेंशन हो गया, पर इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर प्री आइडिएशन या आइडिएशन लेवल से लेके फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स, पहले कस्टमर्स तक सपोर्ट दिया जाता है या फिर एक इनिशियल रेवेन्यू तक सपोर्ट दिया जाता है। एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंदर इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर, मार्केट वैलिडेशन, थोड़ा बहुत सेल्स होने के बाद जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे स्केल करना होता है, एक्सेलरेट मतलब बहुत फास्ट मूव करना होता है, उनके लिए उस टाइप का सपोर्ट दिया जाता है। वहां पे उनको बिजनेस मेंटर्स, पार्टनर्स, ये सब चीजें उनको सपोर्ट, व्हेन वी शुड नो दैट वी नीड एन इंक्यूबेटर और फॉर आवर आइडिया नॉट, एग्जैक्टली दैट इज द रीजन व्हाई यू आर हियर। सो यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दे हेल्प यू वेंचर डिफाइन बेटर देन द इनिशियल प्रोडक्ट्स, दैट इज इंक्यूबेटर। एक्सेलरेटर बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक मार्केट को कैप्चर कर लिया है और अगर आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो होना चाहते हैं, तो एक एक्सेलरेटर आपको सपोर्ट करता है ताकि आप बहुत जल्दी फटाफट एक्सेलरेट कर सके। That's the difference between incubator and accelerator. So, अगर आप प्री आइडिएशन पे हो या आप आइडिएशन लेवल पे हो, आपका प्रोटोटाइप बन रहा है, आप कुछ बना रहे हो जो कि मार्केट में आप देने के लिए तैयार कर रहे हो, या कुछ किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो,
तो वो लेवल पे आपको इंक्यूबेटर पे जाना जरूरी है। जब आपके पास में पहले 10 कस्टमर आ चुके हैं, ओके, जो आपको पैसा दे रहे हैं, या आपका एक स्पेसिफिक क्रिटिकल मास का 30-40 लाख रुपए का टर्नओवर हो चुका है, और अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हम 100 करोड़ का करना चाहते हैं, दैट इज व्हेन यू गो फॉर एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। नाउ ये करते क्या है ये लोग, और एज शिव राइटली पॉइंटेड आउट, हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कहां पे जाना है और क्यों जाना है। आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आप जो बिजनेस में हो वो कौन सा बिजनेस है, वो कौन सा एरिया है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अगर आप एनर्जी साइड में कर रहे हो, आप क्या सर्कुलर इकोनॉमी में काम कर रहे हो, या बायोटेक में काम कर रहे हो, आप लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो, आप डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हो, यू नीड एन इंक्यूबेशन सेंटर हु हैज पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सपोर्टिंग सच स्टार्टअप्स. Okay, you need to be aware, does this incubation center have the infrastructure capacity that you will be able to do your first initial set of operations over there? On that basis, you need to select an incubation center. There is a concept of co-founders. There is a concept these days of co-incubators, where there is a business incubator and there is a technical incubator. Technical incubator helps the startup on the technical aspects. A business incubator helps the startup on the business aspects. Both can do both, but then there are core competencies that they have. Okay, and I'll give you some examples of startups and how we have worked with them in the part of the presentation. But I hope you get the point. Based on your startup, based on the people who are you creating value for, based on which geographical region your customer base is, based on what is the technological aspect over there, which is the customer you are trying to decide work with, based on all these parameters, you decide which incubation center you should participate with or seek support from. You need to decide what stage of a venture are you in. Are you at pre-ideation, pre-revenue level, or are you at post-revenue level where user interface has already taken place? Based on that, you need to decide, I want to participate in an accelerator program or I want to participate in incubation center program. There are thousands of incubation centers right now, literally thousands. Each and every city, to the best of my understanding, or at least each and every district has a very powerful incubator these days. And if you talk about places like Ahmedabad, there are around 40 plus incubation centers just in the city of Ahmedabad. If you talk about Indore, I am aware about at least 7 incubation centers that are present, and they are there. Richa, you have asked, does accelerator take equity? Well, that depends. Incubation centers also take equity, and accelerators also take equity. But then that is your call. When to give equity, how much to give equity, and it's a long discussion. With limited amount of time, I may not be able to answer that question of yours, but do get in touch with me on LinkedIn and we can take our conversations forward in the matters. At the same point of time, आपको डिसाइड करना है आप कौन से स्टेज पे हो, आप कौन से मार्केट पे हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बायोटेक का कोई स्टार्टअप है तो सावली बायो इंक्यूबेटर अहमदाबाद में है, या एनसीएल पुणे में है, या आपके रीजनल एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक इंक्यूबेशन सेंटर होगा जहां पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा प्रेजेंट है, वो इंक्यूबेटर में जाना जरूरी, इंटरेस्टिंग होगा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपका एनर्जी रिलेटेड कोई स्टार्टअप हो, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्टार्टअप हो, I invite you. We are one of the top 5 incubation centers nationally in private university category. आप हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकते हो. अगर आपका बिजनेस साइड का इंक्यूबेशन सेंटर हो तो IIM अहमदाबाद का इंक्यूबेशन सेंटर है, IIT पवई का इंक्यूबेशन सेंटर है टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर. These are some of the best incubation centers nationally. KIT, Kalinga Institute of Technology, KIT Bhubaneswar में, it's an amazing incubation center. Startup Village Kerala, insanely powerful incubation center. Chameli Devi Institute, IIT Indore, IIM Indore are amazing incubation centers. Please approach them. Ask for their help. They are here to support you. Of course, IGNOU has its own extremely powerful infrastructure in place. Ask them for your support. आपको क्या चाहिए, आपको डिफाइन करके आपको पूछना जरूरी है. जब तक आपको क्या चाहिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तब तक आप इंक्यूबेट कहाँ होंगे नहीं पता होगा. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, अगर मैं किसी जगह पे इंक्यूबेशन के लिए जाता हूं तो मुझे क्यों इंक्यूबेट होना चाहिए? एनीबॉडी? व्हाई शुड वन गेट इंक्यूबेटेड? So for like initial hand holding and to get proper mentorship. Okay, mentorship, hand holding. Anybody else? Paisa, incubation centers have money to give. They can give you money. What else? कई लोगों को ये डर होता है कि मैं अगर इंक्यूबेशन सेंटर में जाऊंगा
मेरा आइडिया लेके, तो चांसेस है माय आइडिया विल बी कॉपीड। वेरी कैंडिडली ये बहुत ही नेगेटिव डर है। इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया एंड इफ यू आर एबल, if you share it with somebody and if it can be copied that easily, then that business is actually not worth entering into. Okay, आपको अपना बैरियर टू एंट्री बढ़िया क्रिएट करना बहुत जरूरी हो जाएगा अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। आपको पता होना चाहिए, और ये डर लाजमी बिल्कुल नहीं है। आपके पास उतना इंक्यूबेशन सेंटर का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए है कि वो आपको सपोर्ट करे। वो आपका कॉपी करके क्या कर लेगा? इंक्यूबेशन सेंटर में मेरे जैसे लोग होते हैं जिनका वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है, वो लोग एक्चुअली मार्केट में गिव बैक करने के लिए यहाँ पे आते हैं। Okay, they are paid. They are very well paid. But at the same point of time, the money is not the reason why we participate. Okay, so please be aware about it. They provide a lot of support in exchange of what? That is what Shiv Mishra asked. Well, that's a very pertinent and valid question. उनको क्या फायदा है? शिव जी एक चीज समझिए कि एक इंक्यूबेशन सेंटर का एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया, अगर वो शार्क टैंक इंडिया में आ गया, तो फिर उसको अपने इंक्यूबेशन सेंटर का मार्केटिंग करने की जरूरत होती है। इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश होता है, उसके पास पीछे कई बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटैच्ड होते हैं। ओके, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटैच होते हैं और वो बताते हैं कि बॉस मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में ये स्टार्टअप ने सपोर्ट किया और वो शार्क टैंक इंडिया में आ गया, या बीएससी के प्रेसिडेंट ने उसके अंदर पैसा डाला हुआ है, या फिर उतना उसका मार्केटिंग हो गया, तो फिर वो इंक्यूबेशन सेंटर की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन gets created when an incubation center associated with education institution gets support or gets recognition. Point of time उससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए कि भैया मेरे वहां इंक्यूबेट हुआ बच्चा इतना पावरफुल है कि वो मार्केट में पैसा कमा के दिखा रहा है ना, मोर देन इवन फॉर प्लेसमेंट्स। सो ये चीज इंक्यूबेशन सेंटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। At the same point of time, some incubation centers take some equity. And mind you, that equity is not a very large amount of equity. That is less than 10%, sometimes less than 5% also, and it is just to put theirs in the game more than anything else. So be aware about it. Join क्यों करना चाहिए? एक चीज समझिए बॉस, अगर आप एक छोटी एंटिटी हो और आप मार्केट में जब उतर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो जो कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टेल, रिलायंस, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप चैलेंज कर रहे हो। ओके, अगर आप उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जब आप चैलेंज, चांसेस है कि अगर आप अकेले होगे तो आपको खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब खा गए, you'll be killed that easily. बट एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बैकिंग के साथ आप अगर मार्केट में एंटर होते हो, तो फिर अगर कोई लीगल कंप्लायंस बाद में होते हैं तो फिर 10 बार सोचेंगे आपके साथ में एंगेज होने से पहले, क्योंकि उनको पता है कि आपको बैक करने के लिए बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सो इस रीजन से लोग इंक्यूबेट होते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक लिमिटेड आपके पास वो बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है। एक आप आपको ऐसा सिचुएशन होता है कि भैया मेरे को ये वेल्डिंग मशीन चाहिए, ये इक्विपमेंट चाहिए, जो आप अकेले लेने जाओगे तो कॉस्टली होगा। ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर 15, 20, 25, 50, 100 इंक्यूबेटर्स के बीच में एक बेसिक कॉमन सेटअप खड़ा करते हैं, बेसिक कॉमन आईपीआर के लॉयर्स को हायर करते हैं, बेसिक कॉमन सीएस को हायर, जो कि आपके कंप्लायंस के लिए टेक करते हैं। ये सब चीजों के लिए आपको सपोर्ट, आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, आपका आईपी फाइल करने के लिए सपोर्ट करते हैं, आपको फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स लाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। जो चीजें आप अकेले फाइट करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इस रीजन से लोग इंक्यूबेशन सेंटर में पार्टिसिपेट करते हैं। Richa, again, why incubators failed? We can have a very long discussions about it. I have been a part of some incubation centers who have failed. I have been a part of 2 incubation centers who have been insanely successful. Again, not a part of the topic today. We can connect me on LinkedIn. We can discuss this in a lot of detail. I do a lot of FDPs when talk to people who want to set up incubation centers, and we can take this forward. But shortly, अगर intent सही नहीं होता है, उनका क्लैरिटी नहीं होता है कि इंक्यूबेशन सेंटर क्यों एस्टैब्लिश करना है, उसकी वजह से फेल होता है। ओके, एक्सीलेंट डिस्कशन व्हिच क्रिएट्स न्यू आइडियाज। थैंक यू सो मच गोपाल जी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन? जस्ट अ सेकंड। ओके, व्हाट डू दे डू? वो करते क्या बस?
मैंने अभी तक काफी सारी चीजें बता दी, वो करते क्या है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कॉमन एक्टिविटीज के अंदर कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक कॉमन स्पेस देते हैं, कॉमन सीए देते हैं, कॉमन जीएसटी का प्रैक्टिशनर देते हैं, आपके कंप्लायंसेस के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, आपको टेक्निकल मेंटरशिप देते हैं, आपको मैनेजमेंट मेंटरशिप देते हैं, आपको वैसे लोग वहां पे आते हैं जो जिंदगी में कभी अपने धंधे में गलतियां करके बैठे हुए हैं, कनेक्ट्स लेके आते हैं। ओके, सो कनेक्ट्स के साथ साथ में आपको फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स लाके देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आप स्टार्टअप है, आपको कोई बड़ी कंपनी ऑर्डर नहीं देती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि एक इंक्यूबेशन सेंटर इन्वॉल्व है और उसका मार्केट में कुछ स्टैंडिंग है, उसके गुडविल के बेसिस के ऊपर स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स मिलते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हमारे स्टार्टअप्स के साथ में हुआ है, और यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट इट कि ये सब चीजों की वजह से इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट मिलना चाहिए और मिलता है। आप अगर मतलब आपको आपके लिए वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके देते हैं कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का कुछ R&D करना है, आपको कुछ 3D प्रिंट करके उसका देखना है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं, आपको बिजनेस कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपका बिजनेस मॉडल का वैलिडेशन करके देते हैं फ्रॉम मार्केट एक्सपर्ट्स। दिस इज व्हाट एन इंक्यूबेशन सेंटर एक्चुअली डज। ओके, I'll skip this slide. I'll give you some stories. Okay, मैं 3 stories से end करने वाला हूँ. 2 of them are student projects and 2 of them are cases of student projects becoming startups. So you will understand what an incubation center does, how academics incubated startups and take things forward. So हम लोग सेप्ट यूनिवर्सिटी करके अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, डिजाइन कॉलेज है, का MBA प्रोग्राम है, वहां पे आई यूज्ड टू टीच, और वहां पे एक क्लासरूम प्रोजेक्ट हुआ जहां पे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बॉस नया सो क्लासरूम प्रोजेक्ट्स वेयर स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू डू 100 आवर्स फर्स्ट पर्सन शॉट वीडियो, 100 घंटे का पहले आपने खुद शूट किया हो, वीडियो लेके आओ। सो और जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो उसमें से 3 बच्चों ने बोला हमको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट का वीडियो लेके आओ, तो क्रिकेट का बैटिंग करते हुए वीडियो लेके आए, बॉलिंग करते हुए वीडियो लेके आए, पार्थिव पटेल का इंटरव्यू लेके आए। 30 घंटे 40 घंटे हो गए, फिर थक के ग्राउंड में जाके बैठ गए और वहां पे उन्होंने जो दिखाया उसको शूट करना शुरू किया। सो पेड़ से एक स्ट्रिंग को अटैच करके बॉल को नीचे रख के प्रैक्टिस करते हैं। जो थोड़ा बहुत क्रिकेट जानते हैं, सीखे, उनको पता होगा एक नॉक्स बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? तो उसका टाइमिंग सेट करने के लिए करते हैं। तो उन्होंने कोच को पूछा कि हम ये क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा टाइमिंग बराबर आता है, बैट के एक स्पेसिफिक पोर्शन में जब बॉल को लगता है तो वो मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सेंसर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1500 रुपए का बैट और कुछ 150 रुपए के सेंसर को इकट्ठा करने के बाद में 2000 रुपए से कम के अंदर में एक बैट ऐसा उन बच्चों ने डेवलप किया, और उन्होंने इतना बढ़िया बैट था वो कि वो एक्यूरेटली बताता था बैट्समैन को कि कितनी बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या स्वीट स्पॉट को हिट हुआ। आज से 10 साल पहले वो पेटेंटेबल चीज थी। इंटरेस्टिंगली अभी 3 महीने पहले ही मैंने एक पहला बैट देखा हुआ है जो कि सेंसर इंटीग्रेटेड है, बट अब समझिए 10 साल तक एक पेटेंटेबल प्रोडक्ट एक क्लासरूम प्रोजेक्ट से निकला है। लोग ऐसा बैट को 2000 रुपए से कम के बैट को 15-20 हजार रुपए देने को तैयार हो गए थे। ओके, अब उसको नेक्स्ट लेवल पे इंटीग्रेट करने के लिए पूरे बैट पर हेड ऑफ सेंसर लगा के रखे हुए थे। कितना आसान चीज है। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर 7 रुपए का एक आता है, और पूरे बैट के साथ इंटीग्रेट करके रास्पबेरी पाई को इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा कुछ दूसरा 1500-2000 रुपए के आसपास। अभी रास्पबेरी पाई थोड़ा सा महंगा हो गया पर ज्यादा नहीं है। अब इसको बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके कितना बड़ा धंधा कर सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लासरूम प्रोजेक्ट था जो कि एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया में कन्वर्ट हो गया था। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। आप कई बार बोलते हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी आ गई। 3 बच्चे दूसरे थे, उन्होंने बोला कि बॉस अगेन 100 घंटे का वीडियो। तो बच्चों ने मुझे सैंडविच पे काम कर देना। ठीक है, सैंडविच पे काम करो, जो ठेले पे सैंडविचेस मिलती है। तो उन्होंने आलू मटर सैंडविच पे देखा, वेजिटेबल सैंडविच देखा, बोला आइडिया लेके आओ। तो फिर वो ब्रेड तक गए। ब्रेड को जब हम यूज करते हैं वो तो हम चारों साइड से काटते हैं। जब चारों साइड से काटते हैं तो कुछ 35% ऑफ द ब्रेड इज वेस्टेज इन वेट टर्म्स। वजन के टर्म में 35% ब्रेड का वजन वेस्ट होता है, और इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि उसका डाई का डिजाइन ऐसा है। 400 साल से हम ब्रेड बेक कर रहे हैं और 400 साल से एक ही डिजाइन से हम ब्रेड डाई बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली उन्होंने डाई का सिर्फ शेप बदल दिया, और ये हॉलो स्क्वायर है उसकी जगह पे 8 शेप का 8 नंबर के शेप का डाई बनाया था। तो जो वेस्ट
वेस्टेज का लेवल था वो 70% रिड्यूस कर दिया था। मतलब 35% वेस्टेज को कम करके उन्होंने 7-8% तक कम कर दिया था, क्योंकि उन्होंने डाई इस तरह बना के दी थी। अब ये बॉस, ये भी चीज पेटेंट हो सकती थी, और इसका भी एक, अगर किसी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर एक पूरी बेकर खड़ी कर दी थी यूजिंग दिस डाइज, तो एक जेन्युइनली वैल्यू एडिशन हो पाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये क्लासरूम प्रोजेक्ट्स है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज है जो हमारे बच्चों ने किए हुए हैं। अब मैं कुछ आपको सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस के बारे में, ये दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पे बच्चों ने अपंग मानव मंडल, देयर पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड, उनके प्रोडक्ट्स को बेच के उनको सपोर्ट दिया हुआ था। अगेन अ क्लासरूम प्रोजेक्ट। Now, let me give an example of a successful startup. कंपनी का नाम वाइस ऑर्गेनिक्स है, और ये बेसिकली पेस्टिसाइड्स बनाता है विच आर ऑर्गेनिक। ओके, एंड वो लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक है। दिस इज द मास्टर्स लेवल स्टूडेंट जिसने ये प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था। वेरी हम्बली सर, हिज करंट टर्नओवर इज 10 crores प्लस। ये क्लासरूम प्रोजेक्ट था, और जब हमारे पास में आया हुआ था तो पेटेंट ले ना ले ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे, इंटरेक्ट करें ना करें ऐसे क्वेश्चंस हुआ करते थे। एज ऑन द डेट हमने उसको सपोर्ट किया, पेटेंट भी फाइल इस तरह करवाया ताकि चीजें हो सके। राइट नाउ ही हैज कंपनीज लाइक इफ्को एंड बीएसएफ कमिंग ऑन बोर्ड टू डू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद इट। Right? So this is a Vadodara based startup, very highly recommended, have a look at it. But organic fertilizer is not a new thing. The new thing about these guys is that organic fertilizers have a half life, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एजिथोबैक्टर होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप जब 3 महीने स्टोर करते हो तो उसकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो बचते हैं जिंदा वो 50% 60% हो जाते हैं। ये लोग उसका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लास्ट लेवल पे 3 दिन पहले ऑफ यूजेस पे कर देते, ताकि उसका एफिकेसी और एक्यूरेसी इज हाई बाय 95%। इसका आउटपुट और यील्ड इक्विवेलेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर आ रहा है, इसकी वजह से इसका सेल बहुत जबरदस्त हो रहा है। You're getting my point of, ये सब चीजें ऐसे स्टार्टअप सब आइडिया लेवल पे आते हैं, छोटी सी चीज है पर उसने पूरी की पूरी प्रोसेस को उल्टा कर दिया है। और पैकेजिंग इसलिए किया हुआ है कि जो उसका जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन है ऑफ दोस स्मॉल पार्टिकल्स वो लास्ट स्टेज पे हो। दिस स्मॉल इनोवेशन, स्मॉल चेंज इज एबल टू ब्रिंग अबाउट सच अ लार्ज वैल्यू। इस ऐसे स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट इज केटीन। नाउ केटीन एक सीए है भैया, उनकी वाइफ है और एक टेक्निकल R&D के एक्सपर्ट्स हैं। इन 3 जनों ने एक्सपीरियंस पीपल 14 इयर्स प्लस उन्होंने इंक्यूबेट किया हुआ है, उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, और ऑनियन ऑयल और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स को, ऑर्गेनिक चीजों को यूज करके शैम्पूज बना रहे हैं। अगर आप Amazon पे जाके देखोगे तो आपको इसका प्रोडक्ट आज भी मिलेगा। वाटरलेस शैम्पूज उन्होंने डेवलप किया, मतलब पानी नहीं डालने का, शैम्पू का फोम हाथ में डालने का और लगा देने का, हो गया, वो अपने आप ही चला जाएगा और आपके बाल एकदम सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। ट्रैवलिंग के लिए, ट्रेन्स के अंदर ट्रैवलिंग करने के लिए कितनी बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, हम सब देख पा रहे हैं। इनका पर मंथ का सेल्स, सॉरी पर डे का सेल्स कुछ 4-4.5 लाख रुपए आज के तारीख में। अगेन अ स्टार्टअप। लास्ट, आप में से कई लोग अगर शार्क टैंक देख रहे हो तो आपने स्टार्टअप के बारे में देखा होगा। 3rd ईयर इंजीनियरिंग का लड़का अगेन एक सेंसर को लेके आया हुआ था और ब्लाइंड लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया था। जब वो आया था, when he had come in, then at that point of time, at that point of time he was having very limited number of ideas, but eventually what happened is that उसने वो प्रोडक्ट को डेवलप किया, उसका R&D करवा के उसका सर्टिफिकेशन हमने किया। उस सर्टिफिकेशन के बाद में उसकी एक्यूरेसी 97% प्लस आई। तो एक 3rd ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे को फर्स्ट ऑर्डर ONGC में मिला था। ONGC ने सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इंक्यूबेशन सेंटर ने खुद दिया था, सेकंड ऑर्डर ONGC ने दिया था। उसके बाद दिस पर्सन इज नॉट लुकिंग बैक। एज ऑन द डेट द करंट CEO, करंट president of BSE, Bombay Stock Exchange, is one of the investors in this company. Okay, और already with a margin of 50% plus, उसका करंट ऑर्डर्स ऑन हैंड 15 करोड़ प्लस का है। आप समझिए, एक बच्चा जिसके फादर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे इन द ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद and was staying in a rented apartment, is at the age of 24 is happily married, has its own beautiful place to stay, and now has around 10 to 15 different other products already internationally। इस अकेले बंदे ने इंटरनेशनली 9 अवार्ड जीत चुके हैं, 11 कंट्रीज में इसका सेल्स ऑलरेडी है। More than 4 lakh blind people are using his product as on the date.
Okay, this is the kind of value that an incubatee can take because he got incubated, or he or she got incubated at the Light Incubation Center. This is the value that we as academicians can create for startups of tomorrow, for the development of our country. 11 countries, including North Korea, sorry, including South Korea, which is a technologically developed country, वहाँ पे भी इसके products बिक रहे हैं आज की तारीख में. I would like to end my presentation over here by asking you what you wish and what you like, and open for some answering some questions and taking things forward. Thank you. Thank you, Mr. Ranay. That was a very interesting presentation. I think drawn from your rich experience and your exposure by working in these areas. But I think we have extended the time a bit. But I'll request Ms. Janki to make her presentation shorter. Sharma sir, अगर आप comment करना चाहे तो 1 minute आप please comment करें, and then we move ahead to the next speaker. We take the questions together. नहीं, कमेंट्स का तो बहुत ही एक्सीलेंट डिलीवरेशन रहा, और आपने जिस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजों को इंक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर की विद एग्जांपल जो एक्सप्लेन किया है, आई थिंक इससे अच्छा और एक्सप्लेनेशन इंक्यूबेटर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में आपने पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, उसकी क्यों जरूरत है, और उसको उन एस्पेक्ट से उन चीजों से जोड़ दिया जो मेडिकल में हम देखते हैं हमेशा। इंक्यूबेटर की जो बात आती है बच्चे की, कि पहले सबसे पहले वही इंक्यूबेटर की जरूरत है, उसको नर्चर कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ग्रो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हैंडल कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, और वही चीज बेसिकली यहाँ आपने उसको जो जिस तरीके से जोड़ा है, कोरिलेट किया है, एंड लास्ट में जो इतने अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए हैं विद lots of clarifications, I think it is a wonderful presentation. So thank you very much for this presentation. I think we can listen to our next speaker. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you, Sharma sir. आपने बिल्कुल सही कहा, ये लेक्चर सभी तरह के व्यूअर्स या सभी तरह के लिसनर्स को कैटर करने वाला लेक्चर था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, जिन्होंने पहली बार ये टर्मिनोलॉजी सुनी है, उनसे लेकर जो मिडवे है या जो इस एरिया में काम कर रहे हैं. आई थिंक दिस लेक्चर कैटर्ड टू एवरीबॉडी. शर्मा सर हैज वेरी राइटली सेड, थैंक यू फॉर सच एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ फूड फॉर थॉट. हमारे ये यूट्यूब में हमने इसको रिकॉर्डिंग है, एंड इट इज गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब. तो जो हमारे स्टूडेंट्स इसको देख नहीं पाए हैं, वो बाद में भी इसको सुन सकते हैं. सो इट विल बी देयर फॉर पीपल टू वॉच लेटर ऑन ऑल्सो. सो थैंक्स अगेन. So with in the interest of time, we quickly move to the next speaker, Ms. Janaki Joshi. I'll welcome to the program, ma'am. I'll introduce you very briefly before I hand over the platform to you. Ms. Janaki, with an MBA in finance, MCOM in finance, and a work experience of 11 years in the field of startup and education, has had continued success in fulfilling organizational goals. She has rich experience in project execution, project control system for inclusion, and developing training material. She has been licensing with state team and nodal institutions for easy implementation of startup ecosystem. She is currently working as incubation manager and CEO, Atal Incubation Center, Gujarat Technical University. And this unit there supports, it is one of the reputed incubation centers which supports startup and innovation in the areas of healthcare, biotechnology, medical devices, life sciences, and allied sectors. Very interesting profile, ma'am, and definitely you'll have a lot of things to share with all of us. Over to you. Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful introduction. I would like to share my PPT. Majority of the things my colleague Anay sir has already discussed with you people. So I'm not going to talk about what will be what is the incubator, and what will be the what are the accelerator. We'll talk more on the side of the, like, if it is a startup, what we can say, who is a startup, and what are the
we can say what are the schemes and government initiatives are there which is there to support the startups. So first I would like to say whether my screen is visible. If anybody can respond, please. Yes. It Yes, is- ma'am. अने सर आपने बहुत कुछ ले लिया है. So I have very few things to say, and compared to Anay, I am having very few experience in terms of startup and innovation. But will try to give my best for you people, and hope this will be helpful to all those who are attending this session. So when we talk about startup, हम जब भी बात करते हैं कि किसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, बिकॉज आज के दिन में स्टार्टअप एक ऐसा बर्ज वर्ड हो गया है कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप. सो हु इज अ स्टार्टअप? सो एज पर द DPIIT डेफिनेशन वी कैन से अ स्टार्टअप एक कंपनी जो है जिसकी उम्र 10 साल से कम है. जैसे बच्चे की उम्र होती है वैसे कंपनी की भी उम्र अगर 10 साल से कम है, एंड अगर उसका लीगल एंटिटी जो है वो आइदर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या LLP फॉर्म में फॉर्म हुआ है, और उसका जो फिनेंशियल टर्नओवर जो हम बोलते हैं दैट शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 100 करोड़ इन एनी financial years, or that is basically a startup. And the most and important thing about the startup is that it should have scalable business model with a high potential of employment generation, and innovation should be there in their idea. So in short, if I don't say the definition per se, but in short, if I would say that what is startup, then if you have idea, if that idea is having something innovation in that, and as we are living in the era of the technology, तो अगर आपके आइडिया है वो इनोवेटिव है और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से बैक्ड है, सो समथिंग यूनिक यू आर गोइंग टू डू. बट एज जैसे अनिल सर ने अपने सेशन में बोला था कि देयर वाज अ स्कूल क्लासरूम प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए था कि 100 आवर्स का वीडियो करना है. सो हम कुछ भी अगर करना चाहते तो इट इज लिमिटेड, कुछ टाइम तक करेंगे, देन वी आर लाइक या दिस इज अप, अभी और आगे क्या हो सकता है इसमें. बट अंटिल अनलेस यू डोंट हैव दैट पैशन कि नहीं इसमें और कुछ करना है और कुछ करना है, सो दैट पैशन इज देयर, देन एंड देन वी कैन से यू कैन स्टार्ट एनी स्टार्टअप. बिकॉज इफ यू स्टॉप at one level, then that idea cannot go to the startup level. So I always used to say कि अगर आपके पास कोई भी idea है उसमें कुछ भी innovation है and you are passionate, you do have that burning desire that you want to do this, then we can say yes, you can do that, and that is what we say the startup is. Now the most important thing I would like to say here in this presentation, क्योंकि हम ज्यादातर ये यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए कि what is a need of incubation centers and accelerator, what they do. So जैसे हम किसी भी चीज का एक इकोसिस्टम होता है which will boost and support the the era. So for the startup, if we say what are the elements which support the startup ecosystem, then basically we here put government as a center level, because they are the primary motive and pillars to support any ecosystem. And yes, if you have idea, then basically you can go for the any startups to start any startup. But जैसे ही अनय सर ने डिस्कस किया कि कोई भी स्टार्टअप है, अगर एज ए इंडिविजुअल मैं कुछ करना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि I may be good in terms of developing that product, but I may not be good how to market it, where to market it, and at what price to market it, who will be my primary customers, and whom to contact first, with which strategy I should go into the market. And for all such types of to answer such type of question, we do have the we can say incubation center who support us. Incubation centers जो है
उनका रोल जैसे सर ने डिस्कस किया why education institutions need why there is a need of education institution or what incubation centers do. Incubation centers do play a vital role in the we can say कोई भी startup को एक next level तक ले जाने के लिए जो important role play करते हैं वो incubation center है. The reason behind the incubation center, as sir has said कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, whether I should go with incubation center or accelerator. So if you have idea at very basic level, you can definitely go to the incubation center. They can give you a hand-holding support at initial level because they do have, if your project is related as, say for an example, any healthcare, pharma, biotech related project is there, then they need a specific infrastructural support at initial level. So that you will get at the incubation center. Apart from that, not only infrastructure level support, but a rich pool of experts and mentors. As an individual, if I want to reach out to XYZ person, it might be difficult because he's a very big industrialist. So he might not entertain me as an individual person. But if I will go through any incubation center, which is well known, so what will happen that incubation center is having a better negotiation and we can say bargaining power. And it is easy for as an incubation center, it is easy to get on board any mentor and connect you to a good mentor which can support you in your required area. So yes, with the help of incubation center, you can directly get connect of their expert mentors, their infrastructure facility. Next, we can say if you see any government funding and supports are there for taking the assistance from any financial institution, either it is government or private. If you are incubated with any incubation center, it is easy for you to get. Otherwise, it is very difficult as an individual to get, it is possible in terms of private funding, but if you want any government funding, so it is always mandatory that you should go through the incubation center. So that is also for funding support, for the mentoring support, for the infrastructure support, for all such type of support. The incubation centers are your, we can say they are playing a role as a mediator and hand-holding you at a very initial level. So definitely the incubation centers are the key player in, I would say, in the ecosystem. And likewise, once you, reach at one level, at level where you have developed your product or you have proof of concept, and then basically you can, through your incubation center also, you can connect with the accelerator, industrialists and investors. So they will, it is easy for you if you are incubated with any of the good incubation center. So that's why I would say कोई भी startup का ecosystem है, in that yes, startups are the, we can say, seeds. अगर वो startups है तो ही incubation centers and accelerator और investor और industrialists का काम है. But कोई भी startup को एक next level पे ले जाना है, for that I would say कि incubation centers are playing a very important role. So this is the life cycle of any startup, and I would say कि अगर कोई भी startup ideation level पे है, so कोई भी startup जब ideation level पे है and if they come to the incubation center, तो उनकी ideation से validation तक की जो journey है, if they are with the incubation center, it is very easy for them because they will get a proper way and proper direction to take their product or idea to the validation level. And once they develop their idea at a level के जहाँ पे वो किसी को present कर सकते हैं, yes, this is our minimum viable product, and then basically to take it to the early traction or growth stage, incubation centers are supporting these startups to connect with the private investors and we can say HNIs, who can invest in their ideas. So these are, if I would say, where we are standing, we are in the
era of, we can say, startup and innovation. And in last decade, India has seen a tremendous growth in terms of, we can say, startup ecosystem. These are some of the statistics which are available, which I have taken from the Startup India website itself. That in last, if we talk before 2015, what are the era and what are the what are the ecosystem in India for the startup and innovation? And today it is altogether different. So these are the this is one of the graph which will show that before 2015, only Andhra, Kerala, Rajasthan, Goa, they are having the startup policy, but it is not that well known. But once in 2016, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has come up with the Startup India flagship initiative, and after that, as of today, almost 30 states are there who are having their own startup policy under the umbrella of Startup India policy. So this is what the difference is there. Before 2014-15, before 2016, only 4 states were having the policy per se as a namesake. But nowadays, as recently we also get the result of Startup India state startup ranking. And so every state are taking an initiative in a way that they will support a startup and innovative ideas. Just if I would say, okay, when we were studying, if we say that, as sir has said, that was a classroom project. If at that time the policy was like such type of favorable policy were existing, तो शायद उनका ये just classroom project था, that may have turned up to the one स्टार्टअप और इनोवेशन. बट उस टाइम पे जहाँ पे इकोसिस्टम उस टाइप की डेवलप नहीं थी, तो वो क्लासरूम प्रोजेक्ट सिर्फ क्लासरूम प्रोजेक्ट होके रह गया. बट राइट नाउ, एज एवरी गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट इज सपोर्टिंग के अरे आपके पास कुछ भी है, कुछ भी करना चाहते हो, यस वी आर देयर टू सपोर्ट यू. कोई भी आइडिया उसको टेस्ट करना है, प्रोजेक्ट लेवल का आइडिया, यू वांट टू टेस्ट इट, वी आर देयर टू सपोर्ट यू. यू सी हाउ मेनी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट्स आर टेकिंग. Even when we were studying, I would say कि हमने जहाँ graduation भी खत्म किया, nobody was talking about innovation. Masters भी complete किया, nobody talking about innovation. If we say कि ऐसा कुछ करना है, तो वो सिर्फ innovation lab में ही हो सकता था. R&D सिर्फ lab में ही हो सकती है. But see nowadays, schooling level पे government is coming with adult tinkering labs, right? And every next day, government is coming with various initiatives and the innovative challenges. So आप कुछ भी कोई भी फील्ड में कुछ भी नया कर रहे हो, there are something to support your idea. So this is a momentum, we can say. So the generation, today's generation is lucky enough that they are having such a type of we can say environment and ecosystem surrounding them which support the startup and innovation. So yes, I would definitely say that with the impact of this flagship initiative, right now on an average out of we would say somewhere we are having in India, if we talk, more than 732 districts are there, and out of that 642 districts are there which are having at least one startup in their districts. So this is not a small number. We can say we have reached across the India, and as per the Startup India data, more than 67,000 startups are there, and on an average, with the 67,000 startup, 720 plus K jobs are created. So we can say on an average, one startup is, having, is creating 11 jobs. And with the average age of the founder, co-founder, we can say we are having, as India is a young country, startup and innovations are also coming from the young youth and youth people only. And most importantly, majority जो startups and innovation हैं, they are coming from tier 2 and tier 3 cities. And not और एक चीज जो ज़्यादा highlight करना चाहूँगी कि जो as per the data of Startup India,
47% of the startups are having at least one or founder, co-founder who is female, woman founder, co-founder. So as per the data, more than 37,000 startups are having a woman director. So this is not a small amount. When we talk small thing, like I would say, कि जब हम पहले की बात करें, there was one era जब females are not supposed to go outsides. They are not used to go to the schooling, and nowadays we can see the tremendous change in the era that more than 37,000 new innovative enterprises are having a female or woman director. So this is a great change. These are some of the statistics. I won't take more time, but with the help, what government are providing. So government is providing support as institutional support, infrastructure support, IP, patent related support, and funding related support. So each and every policies of the government are focusing on these four types of support by which any startups can initially survive. जैसे कि एज आई सेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जब भी आपको कोई भी आपका आइडिया है अगर उसको टेक्निकली वैलिडेट करना है देन यू नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, राइट, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड अ आईपी सपोर्ट. वो आइडिया को डेवलप करने के लिए यू नीड सर्टेन फंडिंग्स, एंड उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए you need investors. So these all four types of funding, all four types of supports are being provided by the government by various policy. These are some of the initiative of the government who are like I would say कि जो अलग-अलग sectors में startups को support करते हैं. Say for recently, as Startup India is launched in 2016. After that, recently to support digital innovation. So new Digital India initiative is launched, and it is again a flagship program of Government India. So they support these the startups in the education, basically tech-based startup, education, banking, finance, and technology-led startups. Next, to support sector-specific startups, the government of biotechnology come up with the biotechnology policies, that is a Biotechnology Industry and Research Council, BIREC. Recently, they are every year 2 times they come up with the call for application for the biotechnology ignition grant, and they are supporting the startup up to 50 lakh rupees. And next is Atal Innovation Mission. I would say our incubation center, Gujarat Technological University, is the incubation center which is supported by Atal Innovation Mission. They are giving the approval of the incubation center in the various area like sector specific and sector agnostic. And here also they are supporting the incubation center to develop the infrastructure facility as well, and to support the startups in the area for the seed funding as well. So apart from that, MET, Ministry of Electronics and Information Technology, particularly support the startups in the area of IT and software related startups. Then Director General Civil Aviation for the startups in that particular niche domain, that is Drone Tech Startup India. And next, ISRO is there, Indian Space Research Organization. They have also come up with the seed fund. I would say on every next day, a new department is coming with a new initiative to support the startup and innovation in particular domain. So here I will stop my presentation, and it is better to have your, your question, you take your question. Here some of the questions are like how to connect ourselves with the incubator. So
if I would say Atal Innovation Mission, then there is a website of AIM, and over there you will find a number of incubation centers are there. More than 70 incubation centers are there who are working in a particular domain, and they are supporting their area of expertise is listed out over there. If I would say Startup India, then Startup India has come up with Startup India Seed Fund. So they are also having their individual portal in which you will find an approved incubation center who are supporting the startups in the particular area. So likewise, these are these platforms. Each scheme is having their own dedicated website, and over there they have listed out their approved or recognized incubation centers. So by that you can definitely get connected with them. As I said, I'm associated with Atal Innovation Mission, Atal Incubation Center. So sir is having my contact detail, and if you happen to have any question regarding AIM or Atal Incubation Center, you can definitely reach out to me. Apart from that, I was previously working with the Industry Commissionerate Office. So if you happen to have any question regarding Gujarat ecosystem, Anay sir is one of the rich resource person to talk about Gujarat ecosystem. But if you have need to, if अगर आपको कोई connect चाहिए गुजरात की किसी incubation center का, again I am very happy to help you out in that area. Same, our incubation center is also a part of Startup India Seed Fund Incubation Center. So again, we are having very good connects with the Startup India team as well. So we can definitely help you out in any way if we can. So how to raise fund? This is, as sir has said, that it is a very deep and a topic which needed lots of discussion, because how to pitch, what to pitch, and when to what are the key points you need to take care while you are pitching. Yeah, and definitely incubation centers, as I said, they are playing a very important role to connect you with the investors and private angel investors, because incubation center per se having their MOUs with various investors. So they are playing a good important role to connect you with the any investors to raise a fund. And thank you, Ms. Janki. I hope I have covered the things, and I have speed up my presentation. Yeah, in the interest of time, you have speeded it up, and thanks for that. It was a wonderful presentation, very informative, and your slides were also, I must mention, they were very attractive, and they were speaking slides. Thanks for that. So I'm sure like all our viewers must have benefited from your session, because it was because Anay sir, Mr. Anay, he had set the stage, and then you spoke about giving examples, and then you took it further. So it was very well planned. Thanks for the interaction. Thank you, ma'am. जो भी हमारे participants program में हैं, समय हमारे पास कम है, लेकिन एक या दो सवाल हम जरूर ले सकते हैं. आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो. अनय जी भी है और जानकी मैम भी है, आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं. Otherwise, I have also noted down few questions. I can ask that. I think Mr. Anay is also there. Not able to see him. Sir is there. I think I can see his email ID. Okay. So either he'll answer or you can answer. Many of our colleagues are also there. I request one of them to please comment or ask a question. Ranjita is there, and Mamta Bhatia ma'am, Dr. Manoj Dash is also there. You can see my colleagues here. Momita, Mamta ma'am. Yeah, please. Good morning to all. There's not a question, but as Dr. Sharma had rightly said, Anay, you cleared the concept very elaborately to us. Even I was a little about these incubators and incubation centers. I also searched Google a lot, but
this kind of simplified explanation, that was really wonderful. I think our learners might have benefited a lot, and it was really good. Ane, all the concepts were very clearly elaborated by you, and it was a great learning experience for us. And you also, Janki ma'am, as very elaborately, very nicely, you presented the things with such a nice presentation. So thank you both of you. It was great. Thank you. Thank you, Mamta ma'am. मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का अगर हम एक साथ मिला दें, अजय जी का और जानकी जी का, तो इट बिकम्स ए वेरी complete explanation of startup and innovation, that how it can be incubated and then how they can be supported. तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ, जैसे बहुत सारी जो स्लाइड्स थी जानकी जी ने उनको स्किप किया, लेकिन what she covered, she gave a full picture of a startup ecosystem and पूरा life cycle, and in that life cycle where that incubator fits in and what kind of supports would be required by the people जो उसको काम कर रहे हैं. So that way I think both presentation becomes a very good giving full explanation of the incubator and the startup things. Thank you very much. I think ये दोनों presentation हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने को हम शेयर कर सकते हैं, we should do with them so that they can view it again and again, because there are many basic concepts, basic things one should know. Because एक तो वो है उस लेवल के हैं जो काफी कुछ एडवांस लेवल पे आ गए हैं, they are aware of these basic things. लेकिन जो अभी budding है, they are trying to do something. I think if they go through these two videos, then they will be well aware. उनका जो कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन होगा और उन्हें कहाँ क्या करना है, किस तरीके की अप्रोच करनी है, इनक्यूबेटर्स में भी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सपोर्ट मिल सकती है उनको, क्या नहीं मिल सकती है. Those all things I think will be very well explained to them. So thank you very much to both of you, Ajay ji and Janki ji. I think we will trouble you again, because we need people like you who can explain and deliberate things at the level of the students. That's very important. Because we know जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हम एक्सपर्टाइज वाली बात करने लगते हैं और वो कभी कभी हमारे सिर से ऊपर निकल जाती है. वो हमारे तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो स्टूडेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट के लेवल पे वो होनी चाहिए, और स्टूडेंट का मतलब है वो कभी उसने एंटरप्रेन्योरशिप की कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ी, एंटरप्रेन्योरशिप का उसने कभी कोर्स नहीं पढ़ा, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. उनके लिए आई थिंक दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस काइंड ऑफ टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो लोग जो है उनकी बेसिक उनको पता ही नहीं है कि ये टर्म क्या है, किस तरीके की है. एंड इफ यू आर एक्सप्लेनिंग देम इन दिस वे, देन आई थिंक इट विल मेक इट क्लियर, और उनको कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है. इनसे उनकी आगे की एक रास्ता दैट विल बी क्लियर एंड दे विल बी ready to move and then can move in that direction properly. So thank you very much. I think we can take questions from others also. Yes, sir. Yeah, I agree with just 1 minute. I would like to say only 1-2 sentences. Yeah, thank you to both the speaker. And I agree with Dr. O.P. Sharma what he said, because ecosystem is two component. You know, ecosystem is two component, one abiotic and biotic, living and non-living. And both the startup and both the topic, what Janki ji and what Anay ji shared, both are interconnected like two components. So both we should combine both the topic and we should convey it to our student, and it will be better for a better sustainability environment. Thank you so much. Thank you, And Ranjit. thank you to organizing committee also, to both Regional Center Bhopal and NCIDS. So thank you. We just wanted this type of talk more and more for our student and for our faculty and academics. Thank you so much. Thank you, Ranjita. Today our topic, the broad topic under Institutions Innovation Council was Accelerators, Incubation, Opportunities for Students and Faculty, with special focus on early stage entrepreneurs. So as O.P. Sharma sir and Ranjita and all of us rightly said, the speakers were apt, and I'm happy that we chose you both. And starting right from the definition, 2 examples,
You have taken us in such a flow that people have got a knack of what you actually wanted to say. Thanks so much. And if not, your recording is there and we can watch it again for a better understanding. और हमारे वो स्टूडेंट्स जो ये सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी ये YouTube में अवेलेबल है. It will be there and they can make use of it. Since if people are not asking, there are 2 or 3 questions which I have noted down. गोपाल जी है, गोपाल चंद्र जी है, उन्होंने हैंड रेज किया है. गोपाल चंद्र जी कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो हैंड रेज बाय चांस हो गया है. चलो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए. गोपाल जी आपका माइक ऑन नहीं है. नहीं, वो बाय चांस उनका ऑन हो गया. बहुत बहुत अच्छा चर्चा हुआ, बहुत ही खुश हुए. ऐसा होनी चाहिए बीच बीच में चर्चा. कुछ पूछना नहीं है. थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा. बहुत थैंक यू गोपाल जी. Okay, sir. There is a question. I think this I'll ask Aneji this question. How far can artificial intelligence be helpful in startup ecosystem? What is your comment? So, ma'am, artificial intelligence is a very interesting concept. But just like everything else, wherever there is a emotional angle to it that comes into the picture, at that point of time, human intervention is very important. So an artificial intelligence can read, understand, scrap all the data regarding everything else and give an analysis to a specialist human who probably can then understand the human angle to it and bring things in the matter. Artificial intelligence का सबसे बड़ा 3 चीजें होती है. Data gathering, machine understanding and learning of data, and then machine learning happens, and then decision making matrix takes place, and that is when artificial intelligence comes in the picture. But problem is that humans are not logical animals. We are emotional animals. Isliye the best of the logical thought process and the artificial intelligence and the logical understanding are not able to predict the action of humans. And entrepreneurship is about predicting and assimilating and helping humans take on action. So उसकी वजह से artificial intelligence बहुत powerful tool for data input होगा, but the final decision will always be of the human. Artificial intelligence without a human in the loop is going to be a difficult thing for some time to come. This is what my understanding is. अकेला वो नहीं कर पाएगा क्योंकि humans logical है ही नहीं. हम सब emotional beings हैं. हम logic के basis पे decision नहीं ले रहे हैं. इसकी वजह से, but it is a very important tool as an input for artificial intelligence to do expert comments, expert inputs, expert system to give feedback कि भैया पिछली बार इतनी कारण से ये चीजें हुई है, ये डेटा आपको बता रहा है, ये इनपुट दे रहा है. That's that. उसके बाद तो इंसान को बीच में रहना ही पड़ेगा. ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है. Thank you. Thanks for that interesting and thought-provoking response, Aneji. Janki ji mentioned to us that India is the 3rd largest country where we have a startup ecosystem in the whole world. So one of our participants, Ms. Richa Sharma, who has been following and giving a lot of comments, she has asked then what in your opinion, why do incubators fail, in your opinion? So there are many reasons, as even Anay sir has also take a note on that. That is a very big, topic in which we can talk a lot. But there are certain things like there should be one vision and where incubator wants to go. कि हम कौन से विजन के साथ इंक्यूबेशन सेंटर रन कर रहे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं. दैट शुड बी देयर एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर टीम एज वेल जो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए. इफ यू हैव अ प्रॉपर माइंड वी कैन से ऐसे लोग इंक्यूबेशन सेंटर में हैं जिनका भी खुद का भी विजन इंक्यूबेशन सेंटर के विजन के साथ एक मैच हो रहा है, एंड अ प्रॉपर टीम कैन लीड इंक्यूबेशन सेंटर टू अ नेक्स्ट लेवल. Because that is one of the important aspect of any incubation center. Why they fail, there are many reasons. There can be a lack of vision, there can be a lack of infrastructure facilities, there can be a lack of there can be a we can say where it is situated.
इट मे हैपन. इंक्यूबेशन सेंटर का विजन भी बहुत अच्छा है, टीम भी बहुत अच्छी है, करना भी बहुत अच्छी चीजें चाहते हैं, बट वो ऐसी जगह पे है, द लोकेशन वेयर इंक्यूबेशन सेंटर इज लोकेटेड, it is, say for an example, far away from the reach of the people. So wo resources, infrastructure, team, everything is good, but it is not easily accessible. So that also play a big role, क्योंकि वो अगर easily accessible नहीं है तो startups won't go there and won't utilize it. So these are some of the we can say elements which plays a role in the success of incubation center. There are many more, but this is what initially we can say. अगर एक proper direction, जो host है, जो heads है, उनका भी एक अच्छा supportive vision रहता है, जो lead कर रहा है उसका भी वही same way में अच्छा मतलब आगे move forward करने का vision है, उनकी जो expertise है उसको utilize करके incubation center बहुत अच्छा grow कर सकता है. बट देर आर लाइक अगर वो एक्सेसिबल ही नहीं है, अगर वो ब्यूरोक्रेट में ही चल रहा है, देन इट मे हैपन दैट वो स्टार्टअप ऐसा डोमेन है जहाँ पे वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, वेयर यू नीड अ टाइप ऑफ थिंकिंग जो टिपिकल नहीं है, विच इज वी कैन से पार फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक ओपिनियन. सो वो अगर वर्क कल्चर और वो है, देन डेफिनेटली इंक्यूबेशन सेंटर कैन do a fantastic job. Thank you, ma'am. You're right, because there may not be a set of factors actually. You're right. People have to identify their own limiting factors case to case and then try to resolve them. Very rightly said. There's one more question. After that, maybe we can close, Sharma sir, because we are actually we have moved ahead of our planned time. The question is, this is for Ameji. What, in your opinion, is the effect of COVID-19 on startups and innovations? So, COVID-19, there is something known as a black swan event. मतलब अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो there is something known as a black swan event. So, black swan as a animal is a very rare animal to find. वो एक ऐसी चीज होती है जिसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को ड्रास्टिकली हिला देता है, सबके सब पैराडाइम शिफ्टिंग नॉर्म्स को हिला देता है. कोविड-19 हैज बीन एन एक्सट्रीमली पावरफुल इक्विलाइजर. कोविड-19 के 6 महीने बाद अगर आप मुकेश अंबानी हो या फिर आप गौतम अदानी हो या फिर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो, आप सबको खुद को रीथिंक करने की जरूरत पड़ी थी और इट वाज अ वेरी बिग इक्विलाइजर. अपॉर्चुनिटीज ऐसी खड़ी हो गई थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोविड-19 के बाद में कि आपका धंधा कब तक कितना कैसा रहेगा, टिकेगा, किसी को नहीं पता था और सबको रीथिंक करने की जरूरत पड़ी थी, सबको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ी थी, सबको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जितने बड़े आप हो उतने आपके फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, उतनी आपकी मरने की कैपेसिटी ज्यादा है. That was the thought process. COVID-19 has been a very powerful organization changing, economy changing event, but for the smart people, it has been an insanely powerful opportunity. इससे बड़ी opportunity पिछले 30-40 साल में कभी नहीं आई. उतनी बड़ी opportunity COVID-19 है और ये सच में देखने वाले लोगों का perception है कि वो उसके हरे बापा मर गए ऐसा सोचते हैं या फिर अरे वाह कितनी मस्त अपॉर्चुनिटी ऐसा सोचते हैं. सो मेरे मुताबिक इन माय माइंडसेट इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी पिछले 30 साल में नहीं आई. तो आपको एज ए स्टार्टअप फाउंडर, आपको एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबको रीथिंक करने की जरूरत हुई थी कि मैं व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग, व्हाट इज इट दैट आई शुड इन्वेस्ट इन. आई शुड इन्वेस्ट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटीईएस, व्हाट. मैं हफ्ते में 6 दिन एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता हूँ, मेरे को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, मेरे को मैन पावर नहीं मिल रहा था, तो मैं धंधा कैसे करूँ? That was a question, and because of my involvement with startup ecosystem, I was able to recalibrate my own company and enter into services. Understand that my client is also not able to get raw materials, which is my product. So what can I do for them? Startup newer opportunities, avenues, जो आज की तारीख में मेरी करंट कंपनी के टर्नओवर का 50% है. So मैं तो एक छोटी एंटिटी हूँ बॉस. हर एक स्टार्टअप के फाउंडर के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, उसके पास ऑप्शन है कि वो बोले मर गए मैं
या फिर वो बोले इसको मैं किस तरह यूज करूं। यही एंटरप्रेन्योरशिप है और यही एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन है और यही माइंडसेट सिखाने के लिए हम लोग का एज एकेडमिशियंस हम लोग का एग्जिस्टेंस है। That's how I'm looking at it. Yeah, very well said. I'm very happy I asked this question because it is a very positive and optimistic note to end the program. Ma'am, would like to add one more thing. As sir has said rightly, कि जब pandemic आया COVID-19, it is like your thought process, how you see कि जैसे है ना कि अगर किसी को नॉर्थ पोल में AC बेचने भेज दो तो what he will say, there is no opportunity, क्योंकि वहाँ पे requirement ही नहीं है. और if one person will say अगर कह रहे वहाँ पे तो बहुत सारी opportunity है, the reason make it, किसी के पास नहीं है, उसको make it as a prestige thing. कि अगर आपके पास AC या fridge है, it is a prestige, right? It will add a value to your profile. Then everybody will buy. So how you see the scenario and situation, that makes a lot of difference. And just would like to add one thing. As per the recent data, that during this pandemic only, the startup ecosystem has grown like anything. And recently, we are having 100+ unicorns in this COVID pandemics only. So this is the very best example, if we would say कि necessity is the mother of invention. It is well known said कि जब तक अगर हम we have never think कि हम कभी UPIs और उसको इतना इजीली एक्सेप्ट करेंगे. वी द इंडियन माइंडसेट, हम कभी कार्ड और UPIs को एक्सेप्ट करने वाले ही नहीं थे बिकॉज वी नीड अ मनी इन हैंड, तभी वो फील आता है. बट कोविड टीच अस टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. And all the tech-based startups and innovation have played a tremendous growth, get the tremendous growth during the COVID only. So उनके लिए तो COVID भगवान बन के आ गया कि COVID आया इसीलिए उनका बिजनेस चला. So it is like how you see the things. अगर pandemic है, अगर वही सोच के बैठ गए होते तो probably we were not at right now we are. So definitely it is how you see the opportunities. Thank you. Wonderful interaction on this program, and thanks to both of you. I think before we formally close, maybe Sharma ji would like to say a final word before I request my colleague Anshuman to propose the vote of thanks. Sharma sir? नहीं, finally तो optimistic यही रहा कि COVID को people have taken it a very in a positive way. They have started thinking innovatively. What are the changing needs of the people in the changing environment, और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो मिली. जो बात कर रही है जानकी जी की स्टार्टअप्स इतने डेवलप हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज ठीक है कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज भी दी बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. क्योंकि अगर हम कुछ भी नया करने की बात करते हैं तो कोई चैलेंज होगा, उसी का सॉल्यूशन देखेंगे, उसी का हम कोई इस तरीके का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे. एंड दैट आई थिंक वाज द वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दोज ऑल जो लॉसेस हुए. बट एज फार एज द स्टार्टअप एंड बिजनेसेस आर कंसर्न, ये तो चेंज हुआ. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर journey of startup and in this business is you have to think as per the need of the people. What are the changing need? What is the changing demand of the people? और वो ऐसा नहीं आपने एक बार स्टार्टअप सेटअप कर लिया तो बस बैठ गए. उसके बाद में भी अगेन एंड अगेन एवरी टाइम यू हैव टू थिंक क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजिंग वे ऑफ रीचिंग टू देम हो सकता है. बहुत हर फील्ड में यू हैव टू बी इनोवेटिव. और अपॉर्चुनिटीज आई थिंक यू हैव टू जनरेट आल्सो. समटाइम्स जो चैलेंजेस हैं उनको यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज आई थिंक द फाइनल टेक अवे ऑफ the comments given by both the speakers. So thank you very much for such a wonderful presentation by the experts, and also it has become very interactive. Lots of questions, queries that have emerged. उससे clarification तो बहुत हुआ ही होगा. I think we can thank to both and also the participants. So thank you Regional Center, to you and Anshuman ji and all your colleagues कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और ऐसे अच्छे एक्सपर्ट्स को आपने ढूंढ के लाए. ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज वी आर मेकिंग ए डेटाबेस ऑफ दीज एक्सपर्ट्स ऑल्सो, जिनको भविष्य में फिर हम कभी इनवाइट करेंगे और अदर करेंगे.
So thank you very much. Thank you, Sharma sir. To close this wonderful, interesting and need-based session, I call upon Dr. Anshuman Upadhyay to propose the vote of thanks. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज के इस उद्बोधन के लिए, इस सत्र के लिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के दोनों विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का, अनय जी का, जिन्होंने बहुत ही सरलता से विद्यार्थियों को एक प्रश्नावली श्रेणी बना के, एक ट्रेंड बना के लोगों को समझाया। और उन्होंने जो इस बात को जोड़ा कि इंक्यूबेटर और एंटरप्रेन्योरशिप और विश्वविद्यालय से क्या संबंध है, ये वाकई लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों को ये लगता है कि हम विश्वविद्यालय कोई डिग्री लेने जा रहे हैं, तो किस तरह से हम इंक्यूबेटर्स से जुड़ सकते हैं, उनकी नीड क्यों है और किस तरह से अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। तो इन सरल शब्दों से आपका सर छात्रों के लिए समझाना बहुत ही हितकर रहेगा। और मैं अपने हृदय के अतल गहराइयों से क्षेत्र केंद्र भोपाल और एनसीईआरटी की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के युग में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में हमारा हर विद्यार्थी एक उद्यमी हो, उसके लिए ये इग्नू का प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि आपके वक्तव्य से, आपके उद्बोधन से और आपके एक्सपीरियंसेस से हमारे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा। और मैं एक विशेष बात करके, आपके पूरे उद्बोधन में बहुत ही सरलता थी और जो आपने विद्यार्थियों को समय समय पर बॉस कह के संबोधित किया, वो ये इंडिकेट करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं एंड यू आर द बॉस ऑफ योर ओन वर्क। Sir, thank you so much for your deliberations, for your precious time, and I know you are very busy, but still you have given the time. Thank you so much. मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जानकी मैडम का, जो अभी बहुत व्यस्त है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मैनेजर हैं। और आपने जो इकोसिस्टम के बारे में, इंक्यूबेटर के बारे में और अनय सर के साथ तालमेल बिठा के एक संपूर्ण चित्रण किया इंक्यूबेशन एक्सेलेरेटर का, और विद्यार्थियों तथा टीचर्स के जो समझ में आ सके, इतनी सरल भाषा में आपने समझाया। आपका भी क्षेत्र केंद्र भोपाल, एनसीईआरटी, इग्नू और इग्नू के सभी विद्यार्थियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एनसीईआरटी के डायरेक्टर डॉक्टर ओपी शर्मा सर का, जिनके दिशा निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है क्षेत्रीय केंद्रों को। और अनुमति के अनुसार ऑटोनॉमी भी होती है कि हम अपने लेवल से अपने टाइम को चूज करें, अपने एक्सपर्ट्स को चूज करें, और जिससे जो क्षेत्रीय छात्र हैं उनको फायदा हो सके। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सभी क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े क्षेत्रीय निदेशकों का, उप निदेशकों का, सहायक क्षेत्रीय निदेशकों का और इग्नू उद्यमी का, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स का, हमारे इवैल्यूएटर्स का, जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े और इस 2.5 घंटे से भी अधिक चर्चा में आप बने रहे। आप सभी लोग का धन्यवाद और साधुवाद। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बिनी टॉम्स मैडम का, जिनके कुशल दिशा निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका दिशा निर्देश, उनकी सोच और इनके दूरगामी जो योजनाएं हैं वो छात्र हित में बहुत ही अच्छी रहती है, और मैं उनका भी बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी विद्यार्थियों का, अपने साथी डॉक्टर कुमुद वर्मा, डॉक्टर स्मृति गार्गव, डॉक्टर सुभाष रंजन नायक, चंद्र प्रकाश मुसिया जी जो सहायक कुल सचिव हैं, और इग्नू के सभी लोगों का, तथा एनसीईआरटी के जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, जैसे डॉक्टर मौमिता दास, डॉक्टर सुजाता संतोष, डॉक्टर ज्योत्सना दीक्षित, उन सभी को धन्यवाद। और सभी उद्यमी तथा जो मेंटरिंग सेशन ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं और वो इस कार्यक्रम में जुड़े, उनका भी धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद और साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार और जय हिंद। Thank you very much to all of you. Namaskar.